Hello dear students, we are going to begin with ratio of the areas of two similar triangles. Ratio of the areas of two similar triangles. So just see, the theorem is there. The ratio of the areas of two similar triangles. The ratio of areas of two similar triangles is equal to, the ratio of areas of two similar triangles is equal to ratio of the squares of their corresponding sides. Ratio of the square of their corresponding side. So just see, we have two triangles ABC and DEF. We have two triangles ABC and DEF. So these two triangles are similar. It is given to us two triangles are similar, triangle ABC and triangle DEF. So we need to prove area of triangle ABC upon area of triangle DEF. Area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to AB square upon DE square, means AB square upon DE square, corresponding squares sides के square का ratio, and then AC square upon DF square, BC square upon EF square. Okay, तो just see, we construction क्या है, we draw AL perpendicular to BC, we draw AL perpendicular to BC and DM perpendicular to EF. Okay, तो proof will begin with it. Triangle ABC is similar to triangle DEF. It is given to us triangle ABC is similar to triangle DEF. So now एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल ए एंगल डी के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल ना. एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ, तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. तो जस्ट सी, ए बी अपॉन डी, तो ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ, एंड इज इक्वल टू ए सी अपॉन DF. Okay, so just see, area of triangle ABC, we know very well that half base into height. Area of triangle ABC half base into height, यानी कि 1/2 BC into AL. इसका एरिया 1/2 BC into AL, तो 1/2 BC into AL. इसका एरिया 1/2 EF into DM, तो just see 1/2 EF into DM. अब इनको हम डिवाइड कर लेंगे, we will divide these two. तो just see, area of triangle ABC, area of triangle ABC upon area of triangle DEF, area of triangle ABC upon area of triangle DEF, 1/2 BC into AL, 1/2 BC into AL. Okay, and then 1/2 EF into DM, base or perpendicular. तो area of triangle ABC upon area of triangle DEF, area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to what? Half cancel, BC upon EF and AL upon DM, BC upon EF and AL upon DM. So now just see, in triangle ALB and DME, in triangle ALB and DME, तो ALB और DME ये एंगल 90 है, एंगल ALB एंगल DME इक्वल्स टू 90 डिग्री. क्लियर? एंड एंगल B एंगल E के इक्वल है, गिवन है ये. तो एंगल A एंगल B इक्वल्स टू एंगल A, इट वॉज गिवन. ओके, बिकॉज दीज टू ट्राइंगल्स वर सिमिलर, तो एंगल B हमारा एंगल E के इक्वल है. नाउ दीज टू ट्राइंगल्स मतलब ALB और DME, ALB और DME सिमिलर है, तो AL अपॉन DM इक्वल्स टू AB अपॉन D, AL अपॉन DM, AL अपॉन DM, AL अपॉन DM, AL अपॉन DM इज इक्वल टू AB अपॉन D, AB अपॉन D. तो जस्ट सी, AL अपॉन DM, AB अपॉन D ये इसके इक्वल है. लेकिन AB अपॉन D, AB अपॉन D BC अपॉन EF के इक्वल है ना, AB अपॉन D BC अपॉन EF के, AB अपॉन D BC अपॉन EF के इक्वल है. ठीक है, इट वॉज गिवन टू अस. तो AB अपॉन D BC अपॉन EF के इक्वल है, तो इन दोनों को कंबाइन कर दो, BC अपॉन D सॉरी AB अपॉन D और AB अपॉन D ये दोनों इक्वल है. तो AL अपॉन DM विल बी इक्वल टू BC अपॉन EF. तो AL अपॉन DM इक्वल्स टू BC अपॉन EF. AL अपॉन DM BC अपॉन EF के इक्वल है ना, तो BC अपॉन EF और AL अपॉन DM, इस AL अपॉन DM को BC अपॉन EF से रिप्लेस कर दें. ओके, BC अपॉन EF से रिप्लेस किया, तो नाउ इट इज़ व्हाट, BC स्क्वायर इंटू EF स्क्वायर. मतलब जो रेशियो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर. तो जस्ट सी, सिमिलरली ये साइड का रेशियो हो गया ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to now BC square upon EF square. तो BC square upon EF square मतलब ratio of square of their sides. तो similarly area of triangle ABC upon area of triangle DEF, AB square upon DE square, AB square upon DE square, AB square upon
DE square. Another AC square upon DF square. Okay, we can prove that. But similarly, area of triangle ABC upon area of triangle DF, AB square upon DE square, and area of triangle ABC, area of triangle DF, AC square upon DF square. So just see, this is proved now. Area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to AB square upon DE square, AC square upon DF square, and BC square upon EF square. Okay, it is proved now. Yes. So the question is, if the areas of two similar triangles, are in the ratio 25:64, if the areas of two similar triangles are in the ratio 25:64, find the ratio of their corresponding sides. तो just see, लेट कर लेते हैं कि वो दो ट्राइंगल हमारे कौन से हैं, ABC and DF. तो लेट these two triangles are ABC and DEF. Okay, and these two are similar to their ratio. Area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to AB square upon DE square, which is equal to BC square upon EF square is equal to AC square upon DF square, which we proved earlier. So now just see, इसका whole square कर लें, AB upon DE whole square, BC upon EF whole square is equal to AC upon DF whole square. So now it will be equal to 25 upon 64. It is given ना 25 upon 64. ये given है ratio 25 upon 64. Write it 25 5 64 8. इसका whole square लिख दिया. तो AB upon DE, BC upon EF, AC upon DF, and that is equal to what? 5/8, and that is the answer. Okay, just see the areas of two similar triangles. Triangle ABC and PQR. Triangle ABC and PQR are 25 cm square and 49 cm square respectively. QR given and 9.8 cm. तो BC find करना. We need to find BC. तो just see. Triangle ABC is similar to triangle PQR. It is given na ABC similar to PQR. So area of triangle ABC is given 25 cm square. Area of triangle ABC is given 25 cm square. Triangle PQR is given 49 cm square. QR is given 9.8. So just see, ABC upon PQR, area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to BC square upon QR square. BC square upon QR square. So BC upon QR का whole square, area of triangle ABC upon area of triangle PQR, which was 25 upon 49. 25 upon 49. It can be written as 5/7 whole square. 5/7 whole square. तो just see, BC upon QR 5/7 square हट गया. तो BC QR की वैल्यू 9.8. QR is what? 9.8. तो we just put it. BC upon 9.8 is equal to 5/7. So just see, BC equals to 5 into 9.8 upon 7, and that is equal to 7 only. So BC equals to 7 centimeter, and that is your